Hello students, welcome back. Today is day 4 of admission of a partner. Today we will study about adjustment of goodwill when new partner is admitted. We have studied about calculation of new ratio and sacrificing ratio, and today we will discuss how to adjust goodwill when a new partner is admitted. So the reputation built by a firm has an impact on the present profit and the future profits to be earned by the firm. At the time of admission of a partner, the existing partners sacrifice part of their share of profit in favor of the new partner. Hence, to compensate the sacrifice made by the existing partner, goodwill of the firm has to valued and adjusted. देखो जब कोई न्यू पार्टनर आ रहा है तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं दे आर सेक्रीफाइसिंग देयर शेयर, वो अपने पास से कुछ प्रॉफिट का हिस्सा दे रहे हैं जो कि अल्टीमेटली न्यू पार्टनर को मिलेगा एंड फ्यूचर में जब भी प्रॉफिट्स होंगे तो ही विल गेट दैट शेयर ऑफ प्रॉफिट. तो वो जो शेयर वो परचेज कर रहा है उसके लिए वो गुडविल का एडजस्टमेंट हम यहाँ पे करेंगे. इन एडिशन टू कैपिटल न्यू पार्टनर में कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स गुडविल एंड जस्ट गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द पार्टनर्स हु आर सेक्रीफाइसिंग इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो. सो कैसे हम ट्रीट करेंगे इसको? द वेरी फर्स्ट थिंग इज गुडविल इज एन इंटैंजिबल एसेट which enable the firm to earn higher profits than normal profit earned by other firms in the industry. अब एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर नंबर 3 कि गुडविल विच इज क्रिएटेड थ्रू सिंसियर एंड ऑनेस्ट एफर्ट्स मेड बाय द पार्टनर इन पास्ट, दैट इज इंटरनली जनरेटेड गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल. Treatment of goodwill on admission of partner is done to compensate the sacrificing partners by the new partner who acquire the share of future profits. Payment of premium for goodwill is mode of compensating the sacrificing partners for the sacrifice. तो इसमें अलग अलग केसेस होंगे कि जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं हम शेयर उस पर जो गुडविल इनको मिलनी चाहिए उसको कैसे कैसे एडजस्ट करना है. सो द वेरी फर्स्ट केस इज इफ द गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय द न्यू पार्टनर टू द ओल्ड पार्टनर्स. अगर कभी ऐसा एडजस्टमेंट आ जाए दैट द पार्टनर हैज पेड प्राइवेटली द गुडविल, सो इन दैट केस द अमाउंट पेड ऑफ अ गुडविल privately to other partners will not be recorded. For example, if there are two partners X and Y who are sharing profits in 3:2, they admitted Z as a partner for 1/4 share and Z paid directly 80,000 to X and Y as a share of goodwill. डायरेक्टली पे कर दिया मीन्स प्राइवेटली अगर पे कर दिया है तो उसका ट्रीटमेंट दिखाना है. सो देयर विल बी नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज नो अमाउंट हैज़ बीन ब्रॉट इन टू द बिजनेस. ऑन द अदर हैंड, now the normal question is case 2. There are two partners, ठीक है, and the goodwill is brought in by cash by the new or incoming partner and it is retained in the business. New partner जो है वो goodwill लेके आ रहा है and that goodwill is retained in business. तो इसमें दिया गया है the new partner is required to compensate the old partners by paying amount of a share of goodwill. The amounts are paid by the new partner to old partners. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी कोई न्यू पार्टनर है, देखो सीधे डायरेक्टली एंट्री को समझो. व्हेन अ न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग इन हिज गुडविल, द एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट फॉर द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय द पार्टनर. एंड देन दिस प्रीमियम फॉर गुडविल will be credited to the old partners in their sacrificing ratio. You have to remember the goodwill will always be divided in sacrificing ratio. When the new partner is bringing some goodwill, it will be divided in sacrificing ratio. Let's take an example. There are two partners A and B who are sharing profits in the ratio of 3:2. C is admitted for 1/4 share and he brings share of goodwill of 20,000 in cash. We have to pass journal entry for this. So the first entry will be cash account or bank account debit to premium for goodwill account by 20,000 rupees. Now this 20,000 will be divided between A and B in their sacrificing ratio which is 3:2. So the entry will be premium for goodwill account debit 20,000 to A's capital and to B's capital 12,000 and 8,000 respectively. ठीक है, तो हमने क्या किया, जो गुडविल आई 20,000 की कैश में दैट वाज डिवाइडेड बिटवीन पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो. थर्ड है goodwill brought in by a new partner in cash and same is partly or fully withdrawn by old partners. There may be a case when the partners want to withdraw the goodwill that has been credited to them. A new partner has brought capital into the business and the partners had got their share. Now they want to withdraw that amount. So the first two entries will be the same. First will be cash account debit to premium for goodwill
Second will be premium for goodwill to old partners capital account in their sacrificing ratio. Now, if the partners are withdrawing, then the entry will be old partners capital account debit to bank account or to cash account. अगर फुल अमाउंट विड्रॉ करें तो फुल अमाउंट से हाफ विड्रॉ करें, हाफ अमाउंट से 30% करें, 30% से जितना भी विड्रॉ करेंगे उतने अमाउंट से हम एंट्री पास कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल, इट इज गिवन that A, B and C are partners in 3:2:1 ratio. A, B and C are partners in 3:2:1 ratio. They admitted D for 1/4 share. He brings cash 1 lakh rupees including 30,000 for goodwill. D is totally bringing 1 lakh rupees जिसमें 30,000 goodwill यानी कि remaining 70 will be his capital. A and B withdrew the full amount of premium credited to their account. So the first entry is cash account debit, bank account debit, cash or bank, whatever the situation is, to D's capital to premium for goodwill. He is bringing 1 lakh rupees, 70,000 will go in capital account and 30,000 will be credited to his premium for goodwill account. Now this premium for goodwill will be divided between A, B and C in 3:2:1. ठीक है, तो A इसको हम विड्रॉ क्या कहते हैं डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स में 3:1 में, या दैट इज 15, 10 and 5. And अगर पार्टनर्स there is a misprint in question, the question should be A, B and C, all of them withdraw their full amount. So the entry will be A debit, B debit, C debit to cash account. जो अमाउंट 15, 10 and 5 हमने उनको क्रेडिट किया था वही अमाउंट उनका वो विदड्रॉ कर लेंगे. इन केस हाफ बोला होता तो अमाउंट हाफ हो जाते, इन केस 1/4 बोला होता तो अमाउंट 1/4 हो जाते, एंड इस तरीके से आप इसकी एंट्री पास कर लें. So with this we end this video for today. And in the next video, we will discuss further more adjustments of goodwill at the time of admission of a partner. Till then, take care, stay safe, stay healthy.